नमस्कार। आज मंडे 6 जून 2022 डॉक्टर के चैट विद डॉक्टर के SCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में जो आप सभी लोग जानते हैं कि मंडे को एनवायरनमेंट का हमारा प्रोग्राम होता है चैट विद डॉक्टर के SCFI में। तो आज हम इस जो टॉपिक इसमें लिया है, प्रिपरेशन फॉर प्लांटेशन ड्राइव ग्रीनिंग एक्टिविटी इन योर एरियाज। ये टॉपिक इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानसून सीजन आ रहा है और कई जगह पे पहुंच भी चुका है। केरला एंड अराउंड आई थिंक सभी मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में वेरी शॉर्टली गोइंग टू कम। और अभी हमने जस्ट यस्टरडे वन डे बिफोर वी हैड सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सभी लोग जो हैं कहीं कहीं एसोसिएट रहे होंगे। एंड थीम वाज द ओनली सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। हमारे लिए केवल सिंपल वर्ड्स नहीं है, हमें इसको प्रैक्टिकल में करना कैसे है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कुछ एक्शन करेंगे, ग्राउंड में एक्शन होगा। जो कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जब तक हम लोकली एक्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो फोकस था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का कि लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर, वो ट्रू नहीं हो पाएगा। और कल जो है बहुत से जो प्रोग्राम्स हुए, हमारे ऑनरेबल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पे फोकस किया। और जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजेंसीज, NGO, जो कंपनीज, सब ने और इंडिविजुअल्स, सब लोगों ने तो सेलिब्रेट किया। हमारा फोकस रहा पर्टिकुलरली कि हमारे पास अभी 3 बहुत बड़े चैलेंजेज हैं जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं, वो एक है एयर पोल्यूशन, दूसरा जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेज हैं, तीसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये हमारे 3 बिग चैलेंजेस का एक ही सोल्यूशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में प्लांटेशन करें। So our focus is on preparation, plantation drive and greening activity in your surrounding as very shortly monsoon is going to approach। और जो मानसून आने से इन जो प्लांटेशन ड्राइव हम करते हैं उसका सर्वाइवल बहुत ही मोर देन 90% इंश्योर हो जाता है कि ये प्लांट सर्वाइव करेंगे बिकॉज दे आर गेटिंग ऑल वाटर एंड एवरीथिंग देयर। जहाँ भी हम तो उसमें जहाँ पे भी जगह अगर है तो हमें साइट का आइडेंटिफिकेशन करती हैं प्लांटेशन में, उसको ठीक से आपको नॉर्मल समतल करना है और भी अगर कोई इस तरह के जो कोई वीड्स हैं इस तरह से रिमूव करना है। तो लैंड प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ पिट्स के लिए। और पिट साइज जो है नॉर्मली जो रखते हैं वो डिपेंड ऑन द सॉइल ऑल्सो और क्या सॉइल स्टेटा है। सो नॉर्मली जो है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि अगर हम एक लेके चलेंगे तो अच्छा प्लांट का बहुत सर्वाइवल हो जाता है। और अगर आपके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा सा 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट तो कर ही सकते हैं कम से कम। बट स्टैंडर्ड है नॉर्मली कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई का को गड्ढा खोदें और पिट बनाएं उसमें। और उसको करीब 50% तो एटलीस्ट फिल करना पड़ेगा टॉप सॉइल से, जो आपकी सॉइल निकली है गड्ढा करने जब खोदने के बाद 50% उससे उसमें आप जो है काऊ डंग डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं और मैन्योर जो है डालना है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर जो है ये आप डालें उसमें। और उसके बाद जो है आप फिर आता है आपका सिलेक्शन। आप जो है ट्री जो सैपलिंग है वो कैसे आप लगाना चाहते हैं। जो नेटिव ट्री कल हमने बात की थी हमारे प्रोग्राम में कि नेटिव ट्रीज होने चाहिए जो आपके लोकल एरिया के हैं, जो बिकॉज उसमें जो स्कंद पुराण में भी जो हमने कल उसका वर्णन किया था कि पर्टिकुलरली जैसे बेल है, आंवला है, कैथा है, इमली है, पीपल है, बरगद है, आम है, और ये इस तरह के जो 8 ट्री हैं
और ये पंचवटी में भी हैं। इनको हम एक तरह से, या हम आप पास सपोज पीपल बरगद बहुत जगह लेता है, नहीं तो एटलीस्ट जो है जो नीम है, आंवला है, बेल है, ये तो बिल्कुल लगा ही सकते हैं, प्रिपरेशन इसके लिए करें। और इसके साथ भी और भी बहुत पोल्यूशन अबेटमेंट ट्रीज आते हैं जो कि हमें डिपेंड ऑन दी सिचुएशन वो आपको हमें सिलेक्ट करने हैं। कोई भी आप मेडिसिनल प्लांट भी लगा सकते हैं, छोटे जगह है तो उसमें कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि तुलसी है, करी पत्ता है, या और इस तरह के जो आपको ब्राह्मी है, आंवला है, तो बताई मैंने। तो ये सब चीज़ें आप सिलेक्ट कर दें और इनको इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है तो इनको आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ गेटिंग एरिया है, वहाँ पे दिल्ली में गवर्नमेंट जो है फ्री सैपलिंग प्रोवाइड कराती है। तो उसमें आप वहाँ से जो गवर्नमेंट की नर्सरी है, फॉरेस्ट की नर्सरी है, और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे दिल्ली में दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी नर्सरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सैपलिंग आप वहाँ से ले सकते हैं और सैपलिंग लेकर के अपने एरिया में उसको प्लांट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है जो भी आप प्लांटेशन ड्राइव किया विद और जो लोग हैं सर, आसपास के लोग हैं अपने, या RW के लोग हैं, उनके साथ मिलके एक प्लांटेशन ड्राइव करें। देन आपको जो है उसकी जो उसके ऊपर भी और जो है मैन्योर वगैरह डाल के ऊपर से भी डाल दें। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट ऑफ वाटरिंग। आपको बहुत इंश्योर करना है, तभी प्लांट सर्वाइव करेगा, क्योंकि आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी। मानसून में तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको अगर गर्मी है, मानसून में भी बारिश नहीं होती अगर है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्रॉपर वाटरिंग। उसके लिए आप जो है, अगर आपके आसपास का है तो आजकल गवर्नमेंट वो भी स्कीम है पार्कों में, जो जो ट्रीटेड वाटर है जो किचन का निकलता है, जो उसमें एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और अदर जो वाटर अरेंजमेंट भी करें इसमें। और कोशिश करें कि ड्रिप इरीगेशन से करें, सो दैट कि वाटर उसमें कम से कम हो। और उसमें जो अभी हम डिस्कस करेंगे, घड़े वगैरह को यूज़ करके उसमें छोटा सा होल करके उसको भी नीचे रख सकते हैं, तो पानी धीरे 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 जाएगा। पानी आपका जितना प्लांट के रूप को जरूरत होगी उतना प्लांट्स वो उससे लेगा। अगर एक्सेस वाटर की आपको जो है जो वेस्टेज होता है वो नहीं होगा, पानी भी कम होगा, और इस तरह से प्लांट के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग आता है उसकी जो प्रोडक्शन प्लांट का फेंसिंग करना, बिकॉज वो आप जरूरी, अगर आपको ऐसा एरिया बैरिकेटेड है तो ठीक है, बाउंड्री है तब तो ठीक है, अदरवाइज वैसे लगा रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसकी जो है फेंसिंग करनी पड़ेगी। और सबसे जो बेस्ट है जो बैम्बू स्ट्रिप्स है, बैम्बू की फेंसिंग है, वो की जा सकती है, वो इको फ्रेंडली। तो ये सब चीज़ें जो ड्रिप इरीगेशन है और जो आपको बैम्बू फेंसिंग है, और सबसे बड़ी बात तो जो प्लांट्स आप लगा रहे हैं वो कोशिश करें कि कम से कम आपकी जितनी हाइट है उतने हाइट के हों, 5-6 फीट की हाइट को कम से कम प्लांट्स आपको चाहिए, सो दैट कि वो सर्वाइवल जो है उनका अच्छा होगा, प्लांट अच्छे से जो है वो बढ़ेंगे, आगे करेंगे। तो इसमें उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट की एडॉप्शन ऑफ द प्लांट और उसकी केयरिंग, जो पोस्ट केयरिंग पोस्ट प्लांटेशन, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि प्लांट को नर्चर हमें करना है, मतलब 1 साल हमको उसकी जो है 3 सीजन में पूरी देखभाल करनी है। एक किसी जो जो लोग हों वो एक प्लांट को अडॉप्ट कर सकते हैं, सपोज 1 प्लांट 1 पर्सन विलेज में या RW में कहीं पे भी आप लगाते हैं, वो आप कम से कम ओनरशिप हो जाए कि ये प्लांट हमारा है, विल टेक केयर दैट। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं श्री मुकुल चांद जी, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो मुकुल चांद जी पर्टिकुलरली बहुत से इन्वायरमेंट एक्टिविटी में SCFI से साथ जुड़े रहे। लास्ट ईयर मुकुल जी ने अमरोहा में एक डॉक्टर के अग्रवाल की मेमोरी में, जब लास्ट ईयर उनकी जो 17 मई को डेथ हुई, उसके बाद जो है हम लोगों ने प्लान डॉक्टर के अग्रवाल के नाम पे जो प्लांटेशन किया, उसमें यही बड़ी सैपलिंग ली, और जो इसका मटका जो होता है घड़ा, उसको लेकर के ड्रिप इरीगेशन को यूज़ किया, बैम्बू फेंसिंग करके, और लोगों को प्लांट वगैरह अडॉप्ट कराए। तो वो हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक मुकुल जी प्लीज़। सर Thank you for नमस्कार मुकुल जी। inviting me. हाँ, नमस्कार सो नमस्कार। मुकुल जी Thank you ज्वाइन कर लिया। अच्छा, विवेक जी ने भी ज्वाइन कर लिया। तो मैं Oh, बिफोर nice. गोइंग टू मुकुल जी, डेफिनेटली उसे सुनेंगे,
बट मैं चाहूँगा कि विवेक जी ने ज्वाइन कर लिया है कि हमारे विवेक जी ट्रस्टी भी हैं SCFI को, और SCFI को के अग्रवाल के बाद इनका प्रमोट करने में SCFI का बहुत बड़ा योगदान है, और ये इसमें बहुत ही एक्टिवली डिस्पाइट बिजी शेड्यूल, बिकॉज ये बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं और इन्वायरमेंटिस्ट होने के नाते SCFI में बहुत ही एक्टिवली जुड़े रहते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं और हमको भी काफ़ी इंकरेज करते हैं। तो मैं उनके व्यू सुनना चाहूँगा कि हम जो आज का टॉपिक लिया है इस पर विवेक जी कि किस तरह से हम लोगों को, हमारे लोगों को अपना जो है एक एड्रेस करेंगे और अपने व्यू एक्सप्रेस करेंगे। ओवर टू विवेक जी। Thank you to the viewers, and thank you, Mr. Mukul Chand, for joining. Mukul is also a very dear friend of mine. We know each other from school days. And I must appreciate it is something which I am also looking forward for doing. As Mr. Mukul Chand ji ne jo hai, he has devoted his life. He is a businessman, but he sold off all his businesses and decided to serve the society, which is a very big sacrifice to make, and especially devoting his life to the betterment of the society instead of only looking at himself is something very few people in this world are able to do. And this is something which I learned from Dr. KK, because Dr. KK was also leading the same path. He was less of a professional doctor and more of a doctor which believed in serving the society. And today, this environment division, which we have as a part of Heartcare Foundation of India, इसका जो महत्व है वो वहीं से चालू होता है, क्योंकि इसकी बीज डॉक्टर के साहब ने ही बोई थी कि environment and health go together. And today we are talking on the subject of various plants, etc., which we should try to grow around our area. We should try to grow within our area. If we have certain medicinal plants which can be grown even in small pots at home. इसके बारे में हम लोग को मुकुल चांद जी ज़्यादा बताएंगे, and he is already doing great service in Vrindavan by growing the plants in one ashram and converting the sewage water which is there and the bad water there by growing khas and some other kind of plants there, जिससे कि the water become more purified. And it's a great inspiration. I hope we all take this inspiration with us, because the environment and the pollution is affecting all of us. The global warming is also affecting all of us. If today Delhi reached 49 degrees, which was ever recorded in the last 150 years, no one is to be blamed but all of us who are responsible for bringing it up to 149 degrees. And this is only going to increase, it is not going to go down. If the temperature grows up, our crops will get spoiled. इस समय यूपी में 70% आम इस साल कम इसलिए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु थी, और उसकी वजह से काफ़ी आम के फसल पे प्रभाव पड़ा है। इस साल अनाज में गेहूं पे भी प्रभाव पड़ा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द हीट इन इंडिया। सो we don't have to reach the extreme end before learning what to do. We can take precautionary measures from now. गांधी जी ने भी बहुत सही बात कही थी, there is enough for human need but there is never enough for a human greed. And I leave the platform to Mukul Chandji to speak now. Mukul ji, please. Thank you. Yes. Thank you, Vivek. Thank you, Anil ji, for inviting me today. Because Vivek and I have been friends from KG when we used to wet our diapers also. There were no diapers at that time. And we know each other, but I think a lot of foundation for greening areas, etc., has come to us from school times, because it used to be FRI during the times of the British, and a lot of plants and rare species of trees, etc., were there. The school imbibed a lot of these spirits in us. Also imbibed social work in part of activities where we should give back to society. But having said that, getting back to the
issue now. I am sitting with you in the ashram itself, which is near Vrindavan, and it's very sad to see that as you drive down from Delhi, it's a very dry and barren area, which I don't think it was in former times, because the very name Vrindavan means there should have been green areas out here. But wherever I go, the water is salty, it's very sandy, and the whole area is very distressing. So I sat with a couple of people here, religious bodies, and we've decided that there is what is called Chaurasi Kosi Yatra, which is a parikrama around the Govardhan mountain here. And we had a meeting with the DM, and we are going to go in for a plantation drive along this 84 uh, parikrama, 84 kosi, where each point is a religious there is a religious temple, or it has some definition in our scriptures or things like that. So the idea is to plant trees which we can get from the scriptures and which would be unique to that area. So I'll tell you more about this because it's only at a planning stage as yet. It hasn't taken off. But coming to the ashram itself, this is a ashram of around 40 acres, and I was invited here by one of the trustees of Heart Care. So another lady invited me here in April, and when I looked at it, I said, "Oh, this is such a lovely land. Why don't you convert it into a green belt and you can landscape it?" So that's how the work started. So initially, what was planned was we said that let's first secure the boundaries. And this could be applicable for everyone who's listening and for other areas as plantation, that ultimately we have to have a self sustaining project. It cannot always be based on CSR and good Samaritans like Vivek, who are funding such nice things. It should be done by the organization. So what we decided was that along the four boundaries of this ashram, we will plant bamboo. So in the short term, bamboo is very beneficial because it gives revenue after 3 years. Second, I'll share with Dr. Anil Kumar and Vivek later a little video on which they say that how bamboo is a miracle plant. So we are using a species. Bamboo has two species, one which runs all over the place. So that's a dangerous one because you cannot control the growth. The second is a species which grows in clumps. So we are using clumping bamboo. The idea is that we will have a green perimeter around the ashram. So this can be replicated elsewhere also. That you have a green belt which you can harvest after 3 years, as well as provides a barrier against air pollution. Then the second fence layer, what we are doing is we are planting what we call valuable trees like sandalwood, mahogany, and teak. So this is a long-term investment where you can harvest the trees after about 10 to 20 years. So this will provide each tree after 15, 20 years will give you a revenue of about 25, 30,000 rupees. It is a self-sustaining forest area also, so that while you are getting revenue, you are not destroying green cover. Third layer, what we are planting is fruit trees. So a lot of trees, I remember as a child, we used to, whenever a very special guest used to come, they used to be offered phalse ka juice. The second category of not the VVIP, but the VIP guest was given anarka juice. And normal mortals like us, children used to get orange juice. So we are planting the plants also in that way. We are having falsa, shetut, kamrak, lokat, all fruits which have traditionally there but have sort of gone. Even in Delhi, you cannot buy something which is traditionally there because mangoes become out of fashion or it is not available. Maybe it's perishable or whatever it is. So that's the fruit. So these are the three layers we are planning for plantation here in terms of trees. Another thing that is very interesting has now become a big fashion also is a Miyawaki forest. So the ashram has land between the ashram and the nearest road, a land of about 110 feet. So we are planning to plant about 20,000 trees there in the Miyawaki fashion. So currently what we are doing is that for this perimeter area, they have people who fund the ashram.
So they are giving the money for that. But for the area of the Miyawaki forest, we are trying to convert it into a CSR activity for some organization. So 20,000 trees if we plant, I think it will make a very lovely green belt. The third thing that is being done is converting the water from the ashram into reusable water. So water we define into two areas. One is black water and second is gray water. So black water is basically what comes from sewage, etc. Something has gone. I don't know. Yeah, your voice is coming, sir. You can, I think, speak. Is it coming? Is it okay? Yes, Something. yes. The voice is coming. The voice is coming. Okay. Now I think so. Something went. Probably it's the network or something. So we are. Yeah. I think it's okay now. म्यूट है लेकिन आपका शायद. Mukul, we can't hear you. We cannot hear you. Mute, unmute कर लें. हाँ, yeah. Now it's okay. Yeah. No, but we can't still hear you. You have अभी भी नहीं आ रही unmuted, है. but we can't hear you. आवाज अब नहीं आ रही है. Can you hear me now? Yeah, now Yes. it's okay. Vivek, can you hear me now? It's still. Yeah, sure, Yes, definitely. we can hear you very clearly. Please continue. Okay. So the water we separate into two parts. One is black water and gray water. So black water is the sewage water, which is actually dirty water, which cannot be put into the fields directly. So what we do is that the water, if it passes through certain plants to the roots, so maximum it's like fingers of the roots, and as much water goes through these roots, it will keep getting clean, and they will absorb whatever nutrients etc. they want, that will be removed from the water, and then the whatever is suspended settles at the bottom, and then gradually over a period the black water becomes gray and the gray water becomes clean water for reuse. So that is the planning that we are doing for a lot of the vegetable gardens and for the aromatic and the medicinal plants. So that's the basic layout here. When we meet or something, I can share the plans, or you're most welcome to come here also. It's just a 1.5 drive from Delhi. It's a very lovely road where there's not even a single red light. So it's very easy and very accessible. The ashram belongs to Art of Living, which is headed by Shri Ravi Shankar. I'm not a member of the Art of Living, but since my passion is this, I found that I can contribute something, so I'm here on a honorary basis, and that's what I've been doing now for the last month and a half. And today the pits for the trees have started being dug, and we found a person who is going to give the trees also. So all those experiences I would be happy to share, all the resources, where to get trees. I think it can be replicated anywhere in India. Anywhere, and the scale doesn't have to be big. It can be from 100 by 100 square feet to many acres. It depends on the budget and the people behind it. And I think it can be. This is the right time to do the plantation. Bamboo we have planted at a time against all normal people's wishes during the peak hot months, as Vivek was saying, 49 degrees C. We have planted the bamboo, and a very beautiful system for irrigation was laid out. It's a rain pipe, which is a pipe which has many small laser-like holes. So what happens is when you put the water, it creates a sort of a rain condition for the plant. So the plants think monsoons have arrived. And the advantage of planting now is that there is no competition for the plant, because the other weeds and all don't survive in this heat. Only the plant you want is getting the irrigation. So the forest guy who came here, the DFO, was also very happy with this experiment. And there is no bamboo growing in this area. So it will be a landmark. If it is a success,
It will be a very unique 10 species of bamboo we have grown, and I hope it will be a model for people around the area also. They can go have bamboo fields, or they can, there is a mission by the government, probably Dr. Kumar knows about it better than I, Yeah. called National Bamboo Mission. So Yeah. where the government funds also, and they are providing a lot of things. This is an ashram, so they don't get funds from the government. So I don't know if it is enough what I've told you, Yeah. because it's Yeah. all in my mind. But I No, would be happy definitely. to share at any level all these things. Yeah, yeah. I would be very Definitely. I happy. just said Thank is you. just Yeah, thank you, yeah, Mukul. But definitely we have that discussion over that. Actually, for yes, suppose we do some people they don't have much land. Actually, maybe in the they want to plant in the some park, nearby park in the maybe Delhi area and surrounding NCR area. yeah. 100, Yeah, 100 by 100 feet is enough. 100 by 100 yeah, feet. You yeah, can do Miyaki forest in a very small area. That is the beauty yeah. of the system. Yeah, very, very, very good. Yeah, People must we be have a knowing this very is good this. Yeah, this is technique by sorry. the Japanese, but people the Right, different layer right, of the plantation is done, so that the same right. space can be used for multiple the multi layer of the kind of Yeah. development of forest technology. So It this is is a very very good dense, technique. dense, Yeah, very good, yeah, dense foresting, and you all you have to do is prepare the soil for that. Through percolation, mulching, and there's a thing. I'll be happy to share those entire things. I've made a small plan which I give to the workers here, and I just write it in Hindi, so it can be followed by anyone. It's a very simple plan, and in case someone wants, we have out here some many number of experts who have visited the ashram. They all come here voluntarily. I'll be happy to share that resource with anyone who is doing. They will be able to guide whether it's for flowers, whether it's for trees, whether it's for bamboo, or for any other thing. We can do it anywhere you like. Yeah, it's a very it will be a nice work, I think, for yeah, the yeah. generations that follow. Yeah, Yeah, but definitely, suppose people don't have much space or things like, but at least a nearby park and things like with the group people, maybe surrounding your mohalla people they or can RW people, they can join and come together, and some maybe small funding may not be required much. I mean, because government provide free sapling from the most of the government, they provide free absolutely, trees, free yeah, sapling yeah. that way. Only thing is They use some can kind of the labor work and things like is required to digging the pits and the planting and then fencing and the kind of rain that pipe and things like that can be arranged that way. So this is very simple work. People can take that, yeah. Mukul ji. So There's I just think one more thing, one small thing that I just forgot to mention, which I just would like to add. The entire process here, we are going to do without the use of any chemical fertilizer or any such thing. It is going to be totally natural farming. The only resource that we are using out here, because it's an ashram, there are 20 ghee cows. So we are using the cow dung, which we mix with water and spray. And the second thing that we are using is we are using ash from gobar to reduce the pH wherever the pH is higher, wherever it is alkaline. And the other thing that I learned here was is using buttermilk, which you ferment over 15 days. You use that. That is also excellent for revitalizing the. You can do this at home also. You can do all this at home. You don't have to do any fancy things. You can even use a small balcony to plant two gamlas, put two plants in it. It will be a good work. Just simple thing. You just plant tulsi. You can take dhania, crush it, soak it in water like we do our bean sprouts, and put it in the gamla. You will get greenery. Anytime we can do this. It's not a big thing. Another maybe model small that things we are like doing. the Yeah, dhania, pudina, aloe vera, yeah, tulsi, curry very, patta, sadabar. These very are the easily things done. you can grow in the air. Yeah. Exactly. There's just another experiment that we just created yesterday was that in some areas out here, because as you know, Dr. Kumar, I had given you the sample and you had Yeah. so kindly got it tested also and not taken a rupee for the testing. So that Yes, yes. chemical report will be very useful now when we are going after the DM and giving him the report to try and control all that. Is that there are some areas which have got the groundwater has got contaminated because of that effluents passing from industry into the drain.
So unfortunately, now I'm sitting on the other side of the fence. Earlier, I was a businessman and an industrialist, much like Vivek. So we were contributing to pollution. Now I'm sitting on the other side of the fence as a green warrior. But what I'm doing is that we are creating raised beds. So wherever the soil is very rocky, and because normally when there is construction done, you put the rubble into the neighboring area around your land itself, and then you cover it with earth, so it becomes very bad to grow. So what we are doing is we are creating raised beds that will also save us from the water logging. This area where we are located has a very high water table of 8 feet itself. At 8 feet, if you dig, immediately water comes up on the soil, and percolation of water, if you water the field, is very poor. So we are raising a raised beds. I'll be happy to share those also. We just went to the Kabadi, got some wooden slats, and we are making boxes. We are going to fill it with wooden stems, dried leaves, and put some soil, and we are going to grow vegetables in that. So at least the ashram need for 100 people, food for 100 people will be in-house, totally natural, organic. They don't have to buy anything. And I hope in times to come, they will be able to offer all this to other people. The seeds for each and everything, each and every vegetable that we are planting. Now we've created a nursery for 100 vegetables. Each and every seed is a desi seed. It has a history of 200 to 300 years. So they are called heirloom seeds in English, but these have been very carefully sourced from all over India. So it will be a very nice thing. I hope it succeeds and it survives this harsh month of June. Uh, but the seeds have started germinating. I saw them in the bed today, and it brought me a lot of joy, because a lot of people were saying you are growing all kinds of things, fancy things, like we are doing red amla, red jackfruit, white jamun. So these are things which I hope children and people will get excited to do in their area and show to other people. Mukulji, I think this is your passion because you did very good, excellent work in the last year with the name of Dr. K.K. Agarwal sir in the Abroha. No, That that was learning from you that yeah. Skand Puran verse, those 8 trees are like a mantra for me. I always tell everyone these are the 8 trees you should plant. Please don't plant Gulmohar and Jacaranda. Just plant Yeah. these 8 trees. Yes, yes. So that was Yeah. the and this time I think you are gone ahead further to complete the doing in the ashram and the this kind of things are these experiments are repeated is going to be a big change in the for the at least area that was the and the Big temperature will learning process. Big learning. yeah I think that One was more the thing I just remembered. In fact, One lot more of thing. Sorry ashrams to. have, yeah. In Yeah. fact, lot of ashrams have a lot of area, and I wish Yeah. this project what Exactly. Mr. Mukul Chand is doing here is emulated, and कई आश्रम है, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, दिल्ली हो, पंजाब में है, जहाँ जहाँ है, सब लोगों को इस तरीके से आश्रम में खाली जमीन की जगह रखने से अच्छा है कि अगर इस तरीके से पेड़ लगा दें, तो आप सोचिए कितनी ग्रीनरी हो जाएगी। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ग्रीनरी भी होगी और जो रेगुलर नीड्स हैं चाहे वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स की आपकी मेट हो जाएगी उससे बिकॉज यू कैन वॉट एवर द रिक्वायर्ड फॉर द डेली पर्सन सो दैट कैन बी इन हाउस दैट वे सेल्फ सस्टेन दैट Exactly. या And we There's should one. plant fruit trees which give fruits 12 months a year so that there is fruits for the birds and the squirrels and certain animals Precisely. to eat. We have to It also, should नहीं तो be. वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? There's one more thing I just want to share, that because we just started a rice nursery, because this is the time for paddy. So what we have planned is that nowhere will any field be monocropping. There will not be one crop in any field. For example, what we have done is that one field we have created for multigrain. So you have all the millets, you have chana, and you have bhutta. So all these things will grow at the same time, and you can mix them and you can have a very healthy roti instead of just wheat based. The second thing, in rice also, we are growing 4 types of rice. We are growing a black rice, we are growing a red rice, and we are growing what is a very unusual thing is a green rice. So I hope people come once it grows to see these kind of things and get excited and try something new in their areas. yeah They,
children should get excited. People should get excited by plants, not only mobiles and other things. So that is the idea, that this should be an educative area. And I hope, like Vivek mentions, if some other ashram can take it up, it will be a very nice way to go forward. Yeah, I think that we learned from the Mukulji. This very, very new things I and am new learning experimental. myself. Yeah, yeah. Yeah. So definitely, whoever joined and the YouTube and Facebook page of Dr. K.K. Agarwal, definitely I think will be benefited. So in the finally, because we discussed with the Mukulji, so Vivek ji, what will be your final words to the our viewers who were watching in the YouTube and Facebook? What to, because this monsoon is already nearby and this sometime maybe in South India very shortly going to come, and North India is very near future, maybe after 20th or 30th June, maybe here. So what will be your that final message for them? My final thing is that it was a great learning what Mr. Mukul Chand ji said. And I would tell all ki bhaiya, we don't need to wait for monsoon to come. आप लोग अभी से पेड़ लगाइए, उस पेड़ों की जो है अगर आप सेवा करेंगे तो वो बचने की उनकी आशा ज्यादा है. सेकेंडली, आप जहां भी रह रहे हो, अगर हमने देखा है कि अगर आप उसके चारों तरफ 4-5 पेड़ भी लगा लीजिए, तो आप देखिएगा आपके घर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम हो जाए. और दूसरी क्या, आपको स्वच्छ हवा आएगी. इसलिए अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो फिर आप गमलों में प्लांट लगाइए. अगर आप घर में रह रहे हैं तो रोड के ऊपर लगाइए, अगर आपके घर के अंदर जगह कम है. और उसमें क्या करना, हर दिन सुबह जाके आप अगर एक बाल्टी पानी डाल दीजिएगा पेड़ में, तो वो पेड़ से आपको आगे जाके जो फायदा होगा वो बहुत ही ज्यादा है बजाय न लगाने के. इसलिए हमारी तो सभी को है, अगर आप लोग गांव में रह रहे हैं तो गांव में तो बहुत जमीनें हैं, मोहरी है, रोड का साइड है, सब जगह पेड़ लगाइए, पंचायत को इन्वॉल्व करिए. और ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम लोग अपना ही समय को बहुत ज्यादा जो है कष्ट बनाने वाले हैं. इस समय आप देखिए सदगुरु जी ने प्रारंभ किया है सेव द सॉइल का प्रोग्राम. वो भी क्या है, वो यही है, क्योंकि हम लोग पेड़ काट रहे हैं जिसकी वजह से जो हम लोग की अपर लेयर सॉइल की है वो धूल मट्टी में उड़ रही है. जैसे मुकुल चांद जी बोल रहे थे कि इस समय वृंदावन में इतनी धूल है. वृंदावन का मतलब तो यही है कि वन. जब मन नहीं है तो मतलब यही समझ में आ रहा है कि इतनी ज्यादा धूल मट्टी उड़ रही है. ये क्यों उड़ रही है? इसलिए उड़ रही है क्योंकि एक समय वहां पे वन था और उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. और अगर ये सब ऊपर लेयर हम लोग की धूल मट्टी उड़ जाएगी और जाके ओशन में, समुंदर में नीचे चली जाएगी, तो हम लोग का सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, तो हम लोग अनाज क्या उगाएंगे, खाएंगे क्या? तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू. इसके बारे में सब लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए. और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बोल के काम नहीं होगा, ये काम हम लोग का है, ये हम लोग को करना चाहिए. हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उससे वातावरण साफ होगा. सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से काम नहीं होगा. अगर वातावरण खराब है और उन लोग की सेहत ठीक नहीं रहेगी तो वो लोग पढ़ के भी क्या अचीव करेंगे अगर हर समय दवा खाते रहेंगे. हम लोग कैसे, हाउ शुड वी लीड अ लाइफ विदाउट एलिमेंट्स या विदाउट बीमारी, इसके बारे में सोचना चाहिए. और वो जो है बिना स्वच्छ वातावरण के नहीं आ सकता. जी, तो विवेक जी, मुकुल जी ने जिस तरह से बताया, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम. और हमने तो ये कल भी डिस्कस किया था कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी वैल्यू दी है कि एक पेड़ एक साल में उसकी वैल्यू जो एक नॉर्मल जो है जो पेड़ होता है उसकी 74,500 उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, करीब उसमें 75,000 के आसपास एक साल में. तो अगर वो पेड़ जो है 60 साल अगर रहता है अपनी लाइफ में, तो करीब करीब है 40-45-50 लाख की वैल्यू देके जाता है. और अगर कोई हेरिटेज ट्री है मोर देन 100 ईयर्स है तो आपको 1 करोड़ की वैल्यू देके जाता है. वो आपको देता ही है पूरी लाइफ में. एक साल सेवा मांगता है कि एक साल आपको अगर बच्चे की तरह सेवा कर ली, तीनों सीजन निकाल दिए छोटे बच्चे की तरह, तो फिर आपको देगा. वो आपसे फिर लेता नहीं है. और कितनी वैल्यू देता है उसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं. तो अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं
अगर पर पर्सन आप सोचो कि हमारा एक दायित्व बनता है कि 7 या 8 पेड़ हर पर्सन को लगाना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर 7 या 9 पेड़ कोई लगा देता है, वो कहते हैं नरक में नहीं जाता। नरक में नहीं जाने का पर्पज ये है कि यहाँ आपको इतना वातावरण इतना अच्छा होता है कि आदमी खुद ही जो है आसपास वातावरण आपका जो है जगह स्वर्ग बन जाती है। तो इसलिए अगर पर फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो अगर आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करें 40 पौधे तो आपको हर साल हर फैमिली को मस्ट है कहीं न कहीं जगह मिले वहाँ लगाने चाहिए। और हमारी SCFI भी इस पे बहुत काम कर रही है। विवेक जी तो बहुत इंकरेज कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम है। तो जो भी आपको सहयोग है किसी तरह से बट करें। मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो मानसून आ रहा है अभी से तैयारी करें। जो इस टॉपिक का पर्पज यही था, प्रिपरेशन फॉर प्लांटेशन ड्राइव एंड ग्रीनिंग एक्टिविटी इन योर एरियाज में, कि अभी से तैयारी करें। जो भी जगह सिलेक्शन हो या पिट बनाने की हो या मैन्योर का जो भी करना है अरेंजमेंट है या कौन से पेड़ लगाने हैं, सारी कितना कैसे पिट होना चाहिए, कितने साइज के, और जो मुकुल जी ने भी बताया, विवेक जी ने बताया, ये करेंगे तो आई थिंक सबका जो अगर हम सबका मिलके अगर हमारा समुदाय तो निभाएंगे तो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है जो एटलीस्ट लोकल लेवल पे वो थोड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर दिल्ली जैसी जगह में बहुत ज़्यादा हो रहा है वो कम होगा। अच्छा, एक जो हीट आइलैंड इफेक्ट होता है सिटीज़ में वो भी कम होगा। तो आई थिंक मेरी सबसे प्रार्थना है कि इसको ज़रूर आज देखें, यूट्यूब फेसबुक पे दोबारा देखें और इस पर जो है अमल करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो खाली सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुकुल जी का, विवेक जी का और हमारे व्यूअर्स का धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को नहीं क्लोज करते। बहुत बहुत नमस्कार।